The happiest state of India, Mizoram, is a colorful assortment of cultures, faiths and landscapes epitomizing pristine nature, a serene heaven, blending captivating natural beauty and warm, gracious people. Mizoram is the southernmost state of Northeast India. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, envisions ensuring Mizoram's unlimited possibilities through enhanced transport, mobile and broadband connectivity. Brothers and sisters, कनेक्टिविटी बेहतर होने से आपका जीवन तो आसान होता ही है, ईज ऑफ लिविंग तो बढ़ती है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव टूरिज्म सेक्टर पर पड़ता है। आने वाले समय में जब कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं पूरी होगी तो टूरिस्टों की संख्या और बढ़ेगी और इसका सीधा मतलब है आपके लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए भी रोजगार के हजारों नए अवसर भी बनेंगे। Mizoram's hilly terrain and long monsoon period pose infrastructure challenges for telecom services. These challenges encompass geographical, infrastructural, climate and resource factors. The government is tirelessly ensuring reliable telecom and broadband services in Mizoram through funded projects involving optical fiber cables, mobile towers and satellites, overcoming various challenges. To achieve the government's broadband for all vision, 214 mobile towers have been installed in Mizoram, with plans to complete approximately 60 more towers within a year under the 4G saturation project. This initiative aims to ensure 4G mobile coverage in all villages of Mizoram, in accordance with the Universal Service Obligation mandate. Also, 689 kilometers of optical fiber cables have been installed, connecting 41 GPs traditionally and 452 GPs via satellite under the BharatNet initiative. Improved connectivity is facilitating easy access to education, health, business and agricultural services. Farmers are benefiting from better crop management and online marketing, while students are enjoying seamless access to online education. Broadband connectivity is creating new employment opportunities, enabling youth to work from home as needed. Kun hathok mi kan nia internet kan nei atang chuan kan sum don te ul samzokin kan thok theya kan lom ani. Business expansion and enhance outreach. Leveraging the internet's potential to promote, sell locally made handicrafts products. Kun hathok tu kan ia adere internet miron thusaki kan hathok na ate kan tangkai pi ma kan lom tak se tani. Sumdong kan ia BharatNet hi kan sumdon na ko nga hian kan mangtangkai hi ani. Seamless online education. Internet thale chakjok kan nei hi kan lom ma sesong khotlang sesong village आयो इन लोम थू विलेज काउंसिल प्रेसिडेंट के नीनांगिन कसुये। सीमा क्षेत्रों में हम लोग को ये BBN नेटवर्क लगने से बहुत सुविधा हो गया है। BharatNet माचवान थिलती अब बोई खाक बेमा VC वर्क ले थिल दंग ते ऑफिस वर्क हन खोई ही बोई खाक बेमा हे गन BharatNet नुवाई रोचवान ऑफिस वर्क ले थिल दंग ही आउल सम वेक्टो मया हर सन्ना कंटोक लोवा kan lom tak tu setani BBNL ti kan tangkai pui khop maya I village council hian report pek nan te kan manga I kong tin renga sarkar kan ho tu tan hena I internet rapui chip khotlang ina I hetia anga internet tha I kan ho tu tamiron pe hi kan lom tak setani. The government, guided by the Honorable Prime Minister's vision, strives to further development, aiming to bring smiles and sustain Mizoram's stature as the happiest state in India. Sisters and brothers, केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन ने हम नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों के विकास की गति उसे और बढ़ा दिया है। अब मिजोरम के लोगों की बारी विकास की इस मुख्य धारा से जुड़ने की है।